अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज के लैब में जो है वो लैब 11 है। इट्स बेसिकली रिलेटेड टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और इसमें ऑप एम्प को हम लोग जो है वो बेसिक ऑप एम्प जो हमारे पास हैं उनको हम लोग देखेंगे और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। सो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के जो है वो ऑप एम्प्स मतलब कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोगों को ओपन को देखना होगा कि ऑपरेशन एम्पलीफायर जो हमारे पास आईसी अवेलेबल है वो कौन सी है, उसकी कितनी पिन्स हैं, एंड देन फिर हम लोग अपने सर्किट्स की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि कितनी तरह की हम लोगों के पास ऑप एम्प की सर्किट्स या कितनी कॉन्फ़िगरेशन जिसकी बन सकती हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास आईसी अवेलेबल होती है वो है आईसी 741, and it's pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, 5, 6, 7 and 8. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं जी हम लोग जो बेसिक सर्किट है, जो ऑप एम्प की रिप्रेजेंटेशन है, जो नोटेशन है, हम लोग थ्योरेटिकली बुक्स में देखते हैं या पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो ये साइन शो करता है ऑप एम्प को। ये हमारे पास ऑप एम्प है, तो इसकी पिन्स यहाँ पे मेंशन है 7 और 4। जो 7 और 4 हम लोग पिन यूज़ करते हैं वो डीसी बायसिंग के लिए बेसिकली होती है। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज के प्लस 15 वोल्ट्स होते हैं, तो आप पिन नंबर 7 जो है वो यूज़ करेंगे प्लस 15 वोल्ट्स के लिए, और पिन नंबर 4 जो यूज़ करते हैं वो आप माइनस 15 वोल्ट के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास दो पिन्स इसकी होती हैं जिस पे आप इनपुट सिग्नल दे सकते हैं। डिफरेंशियल इनपुट है जिसमें फर्स्ट वन जो होती है वो नेगेटिव, एंड द पॉजिटिव जो नेगेटिव वाली पिन जहाँ पे आपके पास आ रही है इसको कहते हैं इन्वर्टिंग पिन, और सिमिलरली जहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है वहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग पिन होती है। अच्छा, तो यहाँ जो इन्वर्टिंग पिन है इसका जो आईसी के अंदर देखा जाए तो पिन नंबर 2 कहते हैं इसको, पिन नंबर 2 है, और यहाँ पे ये पिन नंबर 3 है, 2 और 3। सो अब हमारे पास जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाए तो सबसे पहले इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आता है, और फिर सिंपल वोल्टेज फॉलोअर और यूनिटी गेन एम्पलीफायर। तो बारी बारी सबको देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो उसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो इन्वर्टिंग पिन जो हमारे पास अवेलेबल है, उस इन्वर्टिंग पिन के ऊपर अगर हम लोग सिग्नल अप्लाई करते हैं तो जो आपके पास आउटपुट आएगी वो फेज शिफ्टेड होगी। मीन्स अगर मैं यहाँ पे क्लोज लूप गेन इसका अगर लिखूँ वो इक्वल होता है RF डिवाइडेड बाय RI। तो जो गेन है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर। तो जो इन्वर्टिंग पिन के ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस को Rin मीन्स इन्वर्टिंग रेजिस्टेंस कहते हैं, और F जो होता है वो आपका फीडबैक रेजिस्टर कहलाता है। ये फीडबैक रेजिस्टर इसलिए होता है कि आप आउटपुट सिग्नल को दोबारा फेडअप कर रहे हैं, मीन्स के आउटपुट से आपने एक लूप बनाया हुआ है इनपुट के लिए यहाँ पर, तो ये एक फीडबैक पाथ हो गया। तो इस फीडबैक पाथ के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो होगा ये कि जब आप इनपुट सिग्नल देंगे इन्वर्टिंग पिन के ऊपर, लेट्स सपोज अगर आपने सिग्नल इन्वर्टिंग पिन पे दिया है और यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं रेजिस्टेंस की, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं 10K एंड 100K, तो इसको हम लोग यहाँ पुट कर लें तो नेगेटिव साइन ऑफ 100K डिवाइडेड बाय 10K, तो जो आउटपुट आएगी वो होगी नेगेटिव 10। तो जो अब हम लोग इससे एक चीज़ और भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारी आउटपुट क्या होगी और आउटपुट कैसी होगी। एज वी नो दैट कि जो ACL है वो इक्वल होता है V आउट ओवर V इन। सो V आउट जो होगी वो होगी 10 टाइम्स नेगेटिव 10 टाइम्स ऑफ V इन। दिस इज योर आउटपुट एट पिन नंबर 6। तो ये पिन नंबर 6 के ऊपर आपके पास होती है ये V आउट होती है। तो आउटपुट आपकी पिन नंबर 6 पे होगी, इनपुट आप पिन नंबर 2 पे और पिन नंबर 3 के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। जो आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर चाहिए, नॉन इन्वर्टिंग चाहिए। तो इसी तरह
अब हम लोग यहाँ आईसी के ऊपर भी देखते हैं। तो आईसी के ऊपर जो नोटेशन बेसिकली यहाँ पे एक टॉप साइड के ऊपर एक नॉच होगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी अगर नॉच है तो आपने फ्लैट साइड को ऊपर करना है, और उसके ऊपर जो लेफ़्ट साइड पे होगा वो सबसे पहली हमारी पिन कहलाएगी। तो पिन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पिन 2 आगे आपके पास जो होगी वो इन्वर्टिंग, पिन 3 नॉन इन्वर्टिंग, पिन नंबर 4 नेगेटिव 15 वोल्ट्स, और पिन 6 जो होगी वो आउटपुट होगी, पिन 7 जो होगी प्लस 15 वोल्ट्स होगी। 8 पिन को हम लोग यूज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आपके पास पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 5 यूज़ की जा रही है। तो ये डीसी नल ऑफसेट जो आपका आ रहा होता है, नल ऑफसेट को आप रिमूव करने के लिए इन पिन को यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आप एक पॉट को पोटेंशियल मीटर को अगर आप यूज़ करें और उससे आप इसके ऑफसेट को सेट कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर पिन 2 और पिन 3 को जो है वो कनेक्ट करेंगे सर्किट के अंदर, विच मीन्स दैट कि हम लोग पिन 2 के ऊपर इनपुट सिग्नल अप्लाई कर देंगे, और इस तरीके से हम लोग इसको आउटपुट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास सिग्नल है साइन वेव, तो जो आउटपुट आएगी वो कुछ ऐसे होगी 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ। ओके, सो ये थी हमारी बेसिक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑप एम्प की। और अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है, और उसके ऊपर आप कैसे आउटपुट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बिल्कुल सिमिलर होता है आपकी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह, बट इसमें एक छोटा सा जो चेंज आता है वो ये है कि आप इनपुट जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट पिन पे नहीं देते, बल्कि आप नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर आप इनपुट अप्लाई कर देते हैं। तो इससे ये होगा कि आपके पास फेज शिफ्ट तो नहीं आएगा, बट आपने यहाँ पर अभी भी जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को अप्लाई किया हुआ, फीडबैक रजिस्टर कनेक्टेड है, इनपुट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन्वर्टिंग इनपुट। और सो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका नॉन इन्वर्टिंग का जो गेन बनता है वो बनेगा 1 + RF डिवाइडेड बाय RI। सो इट्स योर नॉन इन्वर्टिंग। तो अब यहाँ जो हमारे पास रेजिस्टेंस दोनों सेम है, तो 10K डिवाइडेड बाय 10K इट्स 1 एंड 1 + 1, सो ACL इज़ 2। ओके, सो जो आउटपुट होगी V out विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V in। You can see it. Pin 6, 2 and 3, it's same। तो आपने सिर्फ एक जो इनपुट सिग्नल है उसकी आपने जो है वो जहाँ अप्लाई करना है, अब वो आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से। यहाँ आपने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के ऊपर पिन के ऊपर आपने इनपुट सिग्नल अप्लाई कर देना, तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहलाता है। तो जो आउटपुट होगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो होगी इनपुट सिग्नल को फॉलो करेगी, इसमें फेज शिफ्ट नहीं होगा, बट एक चीज़ जो होगी वो होगी आपके पास गेन होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे वोल्टेज फॉलोअर। और इस वोल्टेज फॉलोअर के अंदर क्या है कि आपके पास फीडबैक कनेक्टेड है, बट फीडबैक के अंदर कोई रेजिस्टिव कंपोनेंट नहीं है। अरे सिंपल एक वायर जो कि हम लोगों ने कनेक्ट कर दी है, और पिन नंबर 6 से पिन नंबर 2 मीन्स आउटपुट से आपने इनपुट के ऊपर इन्वर्टिंग इनपुट के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। बट ये बिल्कुल सिमिलर है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह, बट हम लोगों ने वहाँ पर रेजिस्टर जो कनेक्ट किए थे अब यहाँ पर उसको रिमूव कर दिया। तो आपके पास ये यूनिटी गेन एम्पलीफायर कराता है। मीन्स दैट अगर हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन लिखें यहाँ पे ACL विच इज़ इक्वल टू 1 + RF डिवाइडेड बाय RI, तो RF इज इक्वल टू 0, RI इज इक्वल टू 0, सो योर गेन इज इक्वल टू 1। सो V out इज़ बेसिकली इक्वल टू V in, सेम। तो इसलिए इसको जो है वो यूनिटी गेन एम्पलीफायर कहा जाता है। तो इस लैब में ये है कि आप इसको प्रोटीज के ऊपर परफॉर्म करें, ये तीनों सर्किट्स को आप प्रोटीज के ऊपर परफॉर्म करें, इनको देखें। और इसके साथ साथ जो इसका हार्डवेयर का डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो हार्डवेयर के ऊपर मैंने सर्किट को कंप्लीट पैच करके उसकी वीडियो इसी वीडियो के अंदर मैंने अटैच कर दी है, आप उसको भी फॉलो करें कम्प्लीटली और उसको भी समझें इन्हीं स्टेप्स के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो here is lab 11 in which we see the basic operational amplifier. The
first one is inverting amplifier. So let's see how we can make it. In inverting amplifier, we have a resistor here in the inverting pin. This is our op amp, negative, positive is our inverting terminal. Here it's a non-inverting pin. Now we ground the non-inverting pin and apply the input signal here, ground it. The specifications for the input signal is basically 0.5 volt Vp and the frequency is 1k hertz. The value of this resistance is this is inverting resistance and it is equal to 10k, and there is another resistance it's basically a feedback, and the value of feedback resistor is 100k. Now the pins here, the practically the op amp look like this, and here this is the notch which represent the top side of this op amp, and now the pin 1 here, this is the pin 2, and here it's pin 3, and here it's pin 4. Similarly on the other side, pin 5, 6, 7 and 8. This is 741 op amp. Okay, we will use here the pin 2, which is inverting pin. Here the pin 3 is non-inverting, and here it's 6 pin is your output. Pin 4, you need to apply negative 15 volt, and at the pin number 7 you will apply the plus 15 volts. Pin number 1 and pin number 5 basically used for the null offset. To remove the null offset we use this pin and 5, and 8 we don't use here. So now the pins in our circuit here, this pin is 2, this pin is 3, this pin is 6. 6 is your output, pin 2 is your inverting, pin 3 is your non-inverting pin, which we are going to ground this pin. So here this pin is 7 and this pin is 4. This is minus 15 volts and plus 15 volts. When we apply the signal here, basically it's a sine wave. When you apply a sinusoidal signal here, you will get the output according to your gain. So the closed loop gain here, minus time RF divided by RI. So the gain here for this inverting amplifier is 10. ECL minus, basically the RF value is 100k divided by 10k. So k cancel and it's your minus time 10. The ACL, the closed loop gain, basically minus 10. So this 10 represents the closed loop gain, and which means that your V out is equal to 10 times of your Vin. But this negative sign here represent that your output is basically out of phase, means that this negative sign represent the 180 degree phase shift. So at the pin 6 you will get the output like this, basically like that, which is the 10 times of Vin negative and 10 times of Vin positive. This is basically our theoretical background of our inverting amplifier. Similarly, we will see this on the hardware. Now we see the hardware here. Okay. First, we are going to make the DC split power supply. For this, we need to use 2 crocodile wires here. The first step is to connect these 2 wires with your DC supply, the positive, negative, positive, negative.
but we need a positive 15, negative 15 and ground. For this purpose we are going to connect these two ends, the positive one of the first terminal and the second, the negative wire from the second supply terminal. Then we are going to connect these two terminals. Now we have a positive 15 volts, negative 15 volts and ground here. Now we check. First we are going to on the supply here. Now I have already set the 15 and 15 volts for both of the supplies terminal here. Now we just need to connect with the multimeter and verify the voltages. Okay, so voltage is here. This is your positive terminal and it's ground, so it will give you plus 15 volts. So here the positive one and the ground, you will get 14.87. Similarly the negative terminal here and the ground here, now we will get minus 14.77. okay, now we are going to generate here sinusoidal signal and 1 kilohertz frequency and 1 volt V peak, and similarly we will get on the oscilloscope the same signal, sinusoidal signal with 1 volt V peak. And now we are going to pair the circuit here. Here we have an IC and there are two resistors here. This is 100K and this one is a 10K. Now we are going to connect the 100K pin number 6 to pin number 2 and the 10K pin number 2 to pin number, just randomly place anywhere. Now we have pin number 7. First we switch off the supply. Now we will connect this positive terminal of the supply with your pin number 7. So here I'm going to connect the pin number 7 with positive 15 volts. Now here we have this negative 15 volts. We are going to connect this negative with the pin number 4 of your 741 IC. Now we have a ground here, so we need to make a common ground. For that purpose we are using the complete line, the below one is your ground. These all the are grounds, basically our common ground. And here pin 3 should have to replace and apply input. This is our input signal. Okay, we are going to connect this input signal at resistor first and the inverting resistor, and we need to make a pin number 3 ground. So pin number 3 is going to connect with the ground. Now the circuit is completed, and here the positive 7, this is negative 4, and this is our output of channel 2, and here is basically a function generator and oscilloscope common ground, which is going to connect with the main ground. Here pin number 3 is going to connect with the ground. Now we are going to on the switch supply. So here now you can see the output here. We are going to set the voltage per div at 10 here, and this is our
the input signal, the voltage per day or input signal is 1 volt, 1 volt per block. Now the output is phase shifted. It's basically an inverting amplifier. Now we are going to set the position first. You can see that this is our input signal, and here the below one is our output signal. Now you can see that your inverting amplifier is performing successfully. Okay, so our next task is to make a non-inverting amplifier, which is basically simply to amplify the configuration. The basic configuration of a non-inverting amplifier is a little bit different. So for this we use an inverting amplifier. Here we will use op amp, negative and positive. So for non-inverting amplifier we need to apply the signal at your non-inverting pin, and here it's 0.5 volt peak and 1 kilohertz. And now for this time we will ground this end of inverting resistance, and we will apply the feedback. It's basically, now we are going to set this feedback resistance is equal to 10k and your inverting resistance is equal to 10k. Both are the same values. This is your pin number 6, pin 7, pin 4, pin 7 is plus 15 volts, minus 15 volts, and similarly it's 3 pin and 2 pin. So for the gain of non-inverting amplifier, 1 plus RF divided by RI. So gain for this non-inverting amplifier will be equal to 1 plus 10k divided by 10k, which is equal to 2. So your V out, which is equal to 2 times of your V in. Now we are changing the circuits. First we switch off the supply and switch off the function generator, and then switch off the oscilloscope. Now we are going to change the circuit and apply the input at pin 3, which is your non-inverting pin, and ground the inverting resistance at this end. Okay. Now this is your non-inverting amplifier, and the remaining setting will be the same. Now we are going to on the supply again, function generator, and similarly the oscilloscope. So here you can see that our output and input both are in phase with some gain. Here you can see that we have gain here. Basically it's the resistance here, it's 100k, so gain is similar to inverting amplifier. We need to replace this 100k resistance with 10k resistance. So first we switch off the supply and then apply the 10k resistance. Okay, so here we are going to replace this resistance with 100k resistance. Now we are going to on the supply again and function generator. Now we see the output. So here if you see that the output is 2 times of our input signal, you can verify it. Okay, now our last part is the voltage follower. So in voltage follower we have an op amp, negative, positive, and this one is input signal, ground, 0.5 volt VP,
1k hertz, and this is pin 2, pin 3, pin 6 and pin 7, pin 4, minus 15 volt plus 15 volts. If you see here, we are not using any resistance in the feedback and in the inverting pin, because we don't need any gain. So if you see, it's basically look like a non-inverting amplifier, because we are going to apply the input signal at non-inverting pin here. So the gain will be ACL is equal to 1 plus RF divided by RI. So here we don't have RF and RI. We will put the RF and RI is equal to 0. So we will get 1 plus 0 divided by 0, which is 1. So ACL is equal to 1. This is unity gain amplifier. Okay, so now our V out, which is equal to 1 multiply V in, means that V out is equal to V in. It's just a buffer circuit. Now we are going to change the circuit again. First switch off the supply again, function generator, and now we just remove these two resistors, and this wire we are going to connect this wire at pin number 2 to pin number 6. So it's a feedback, simple feedback. Now we are going to again on the supply and function generator and observe the output. So what's our output here? If you see that the output and input both are same, it's basically equal to input over. Okay students, so basically it's our lab 11. Now inshallah we will see in the next lab 12, basic the integration and differential amplifier. Okay, Allah Hafiz.